वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक जो हमारा स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि यू प्रेजेंट रॉन्ग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। आपका लॉन्ग केस वहीं पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है जब आप रॉन्गली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर आपसे दो क्वेश्चन करते हैं, या तो वो आपसे डायग्नोसिस पूछेगा, तो या फिर आपसे वो पूछेगा कि आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो यू सिलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स। पेशेंट्स आपको आके बताएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताएगा। वो आपको बताएगा मुझे हेडेक भी होती है, वो आपको बताएगा बैकएक भी होती है। सिंपल एक पेशेंट आता है आपको आके कहता है कि मुझे हेडेक भी है और मेरी कमर में भी दर्द है और मेरे नी जॉइंट में भी पेन है। व्हाट डायग्नोसिस विल यू मेक? नथिंग। कंफ्यूजन, राइट। एक पेशेंट आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दी है, you present that okay there is cough and fever. What is your diagnosis? Pneumonia. Cough and fever, respiratory tract infection, right? Pain in the right iliac fossa, pain in the right iliac fossa, along with fever, nausea, vomiting, acute appendicitis. But अगर इसके साथ मैं ये लिख दूँ कि there is also joint pain, there is also joint pain, ठीक है। वो कहता है कि जी मेरी हील में पेन होती है। पेशेंट बता सकता है आपको, पेशेंट कहेगा कि मुझे हेडेक है, ठीक है, और आप उसमें हेडेक लिखते हैं, फिर विल बी फिट इन नथिंग। So your selection of words in presenting complaint matters. While in long case you have to wisely select the words. अब students हमारे क्या गलती करते हैं, varicose vein, there are swelling in the leg, ठीक है, केस ही खत्म हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। आपने बताना है देयर इज पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद द engorged veins over the right leg, ताकि you are just opening up the door, your case is going to start, ऑलराइट। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेमैन टर्म में आपने बिल्कुल उसको नहीं कर देना, बहुत कैजुअल नहीं होना, सिलेक्ट द वर्ड्स प्रॉपर्ली एडिक्वेटली, ठीक है। लाइक थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसमें द पेशेंट विल प्रेजेंट विद द swelling in the neck. Remember it, this is not swelling in front of the neck, ठीक है। Who is in front of you? Me. I'm sitting in front of you, ठीक है। Neither it is swelling on the neck, ठीक है। This mobile is on the table, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड ऐसे तो नहीं पड़ा हुआ ना, so this is not on the neck or on the table, ठीक है। This is swelling in the neck. But as far as ulcer is concerned, ulcer is on the skin, ठीक है। It is on the skin, it is not in the skin, all right। whenever there is ulcer, this is on the skin, ठीक है। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरा, जैसे अब थायराइड ग्लैंड है, इसमें अब समटाइम एक मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन में आई हैव सीन पीपल फेलिंग नाउ। What happened, they are just telling that okay, neck swelling and plus fever, plus pain in the neck, ठीक है। You have to differentiate, आप ये गलती करते हो एग्जाम में, आपको डिफरेंशिएट करना है कि पेन और डिस्कम्फर्ट में क्या फर्क है, ठीक है। अगर आप थायराइड के केस में पेन लिख दोगे, that mean you are talking about probably thyroid abscess, which is a rare entity. I never seen any patient with a thyroid abscess, ठीक है। तो अब वो थायराइड एब्सेस, फिर उसके बाद आप स्टिक कर जाते हैं। पेशेंट में फील फीवरिश, पेशेंट में हैव थायराइड टॉक्सिक पेशेंट होते हैं। अब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में अगर आप फीवर लिख दोगे, साथ में तो पेन लिख दोगे, सो यू आर गॉन। अब आप एक्सपेक्ट ना करोगे पास हो, ठीक है। सो इट शुड बी, देखो दिस इज द आर्ट, और दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, और दिस इज एन आर्ट, ठीक है। कंसिडर इट एज एन आर्ट, ठीक है। आपने ऐसे समझना है कि आपने लिमिटेड वर्ड्स को सिलेक्ट करके अपनी डायग्नोसिस बनानी है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि अगर नेक पे अदर देन थायराइड या थायरोइडोसिस कोई स्वेलिंग है तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें? Swelling in the neck, yes, swelling in the neck, In the simple, neck. swelling in the neck, ठीक है। Then your first examination, on examination, you will tell that this swelling moves with deglutition or not. If it is associated with trachea, it will move with dilatation. ठीक है, yes. So there are only few swellings that move with the dilatation. Thyroid is one of it.
and it can be lymph nodes. ठीक है तो it's very simple. If you have midline dermoid swelling, it will not move with the decoration. So you will describe, your answer is that in the long case you will start with the swelling in the neck.